Hello, Assalamu alaikum everyone. Hassan here. You are watching Parhlo and welcome to another exciting episode of Tech Buzz. Tech Buzz के आज के एपिसोड में हम रिव्यू करेंगे Oppo F19 Pro. So without any further ado, let's get started. And as you can see, this is the box design. Blue color का ये box है, bottom पे black color का एक outline है और F का एक लोगो ऑन द टॉप इन्होंने दिया हुआ है, टॉप लेफ्ट पे। नीचे Oppo F19 Pro इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है। आई लाइक द लोगो डिज़ाइन एंड द प्लेसमेंट जिस तरह इन्होंने इस बॉक्स के अंदर की है। काफ़ी डिफरेंट बॉक्स डिज़ाइन बनाया है इसका। और बैक साइड पे हम लोगों को इसके कुछ की फीचर्स मिल रहे हैं। डुअल व्यू वीडियो है, AI कलर पोर्ट्रेट है, 32 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा है एंड 30 वॉट्स का फ्लैश चार्ज है। अलॉन्ग विद दैट कुछ वेरिएंट डिटेल्स लिखी हुई ऑन द बैक साइड। सो दिस इज द बॉक्स और ये स्लाइड ओपन होता है। ये ब्लू कलर का स्लीव इसके ऊपर से निकल जाता है बाहर एंड इनसाइड द बॉक्स वी फाइंड अनदर ब्लैक कलर्ड मैट ब्लैक बॉक्स with the Oppo logo on it. The finish of the box looks very premium and neat, so let's go ahead and see what components are inside this box. So inside the box we find the phone, silicone case, user guide books, 30 watts charging brick, USB Type-C cable, earphones and SIM ejector tool. So this is Oppo F19 Pro. Ultra slim design है इसका, lightweight phone है, the color is very beautiful. और जो वेरिएंट हमें मिला है वो 8GB ऑफ रैम है with 128GB ऑफ स्टोरेज और इसके अंदर मैसिव AI क्वाड वेयर कैमरा सेटअप है और इसका बैक डिज़ाइन जो है वो रिफ्लेक्टिव पर्पल ब्लूइश टोन्स देता है एंड डिफरेंट लाइटिंग। काफ़ी खूबसूरत कलर है। द पर्पल एंड bluish tones look really good on the back side. On the bottom of the phone we find the 3.5mm audio jack, main microphone, USB Type-C port and single speaker grill. On the right side of the phone we find the power button. On the left side of the phone we find the dual SIM tray slot with the volume keys and secondary microphone on the top side. आइए आगे बढ़ते हैं, इसके प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कलर OS 11.1 है, दैट इज बेस्ड ऑन Android 11. The chipset is MediaTek Helio P95 12 nanometers. The CPU is octa-core and the GPU is PowerVR GM9446. There are slight changes to the effects and modifications that you can do in the phone in this Android 11 update. और कलर OS 11.1 के अंदर कुछ और नए फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं। इसके क्वाड रियर कैमरा सेटअप की बात करें तो 48 मेगापिक्सल्स f1.7 वाइड एंगल कैमरा है, 8 मेगापिक्सल्स f2.2 अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है एंड 2 मेगापिक्सल्स का मैक्रो कैमरा है एंड 2 मेगापिक्सल्स का डेप्थ सेंसर है। और इसके सेल्फी कैमरा की बात करें तो 32 मेगापिक्सल्स का पंच होल सिंगल कैमरा है विद अ वाइड एंगल लेंस। और इसके डिस्प्ले की बात करें तो 6.43 इंचेस का सुपर एमोलेड स्क्रीन है with a resolution of 1080 pixels by 2400 pixels FHD+. The pixel density is 409 pixels per inch. The refresh rate is 60 Hz and the brightness of the display can peak up to 800 nits. Oppo F19 की गेमिंग की बात करें तो काफ़ी स्मूथ गेमिंग है
और कुछ इसके अंदर अलग से गेमिंग फीचर्स भी हैं, जैसे गेम फोकस मोड है अलॉन्ग विद द बुलेट नोटिफिकेशंस, जिसकी वजह से आपको जो डिस्ट्रैक्शन है गेम प्ले के अंदर वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाती है और आपका गेम प्ले और इंटरेक्टिव हो जाता है। एंड द चिपसेट जो इसके अंदर हम लोग को मिल रहा है Helio P95 डेफिनेटली काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। और ये चिपसेट हम लोग को Oppo F17 Pro के अंदर भी मिल रहा था, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हम लोग को शायद कुछ डिफरेंस मिलेगा, बट द चिपसेट इज द सेम एज रिलीज्ड इन द F17 Pro version. But on the Super AMOLED display with a 60 Hz of screen, the playback is very smooth in this phone. और इसकी बैटरी की बात कर लें तो 4310 mAh की बैटरी मिल रही है, which is powered by 30 watts flash charger. और आप इसकी बैटरी को अगर 0% पे 5 मिनट्स तक चार्ज करते हैं with the 30 watts flash charger, then it gives you more than 3 hours of talk time. So let's talk about the video playback and display of this phone. 1080p का display है which shows a very good color temperature. The tones are contrasty and very well saturated. 4K वीडियो प्लेबैक के अंदर आपको टाइनीएस्ट डिटेल्स भी इसकी स्क्रीन पे मिल जाती हैं। और बिकॉज इट्स अ सुपर एमोलेड डिस्प्ले, तो इसके अंदर आपको 60 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट मिल रहा है, विच मेक्स द ब्लैक्स इवन मोर गुड। और जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो अच्छा है। इट्स नॉट एज फास्ट एज द साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर्स, बट इट गेट्स द जॉब डन एंड इट्स वर्किंग प्रीटी मच गुड। और इसके डिज़ाइन की बात करें तो प्लास्टिक बैक है विद अ प्लास्टिक फ्रेम। द बेजल्स आर स्लीक इन दिस फोन, ओनली द चिन ऑफ द बेजल इज़ अ लिटिल बिट बिगर देन द अदर बेजल्स ऑफ द फोन। एंड ऑन द बैक डिज़ाइन आपको डिफरेंट कलर मिल जाते हैं, डिफरेंट लाइटिंग, सॉर्ट ऑफ अ नियॉन टिंट जो आपको इसके ऊपर मिल रहा होता है, एंड शोज पर्पल/ब्लू कलर टोन्स इन डिफरेंट लाइटिंग। ऑल्दो जो बैक डिज़ाइन है वो काफ़ी फिंगरप्रिंट फ्रेंडली है, बहुत इजीली फिंगरप्रिंट्स इसके ऊपर लग जाते हैं, बट द ग्रिप ऑफ द फोन इज़ रियली स्मूथ। क्वाड बेयर कैमरा सेटअप है विद अ कर्व डिज़ाइन इन अ रेक्टेंगल बॉडी। और जो कैमरा बम्प है वो थोड़ा सा ह्यूज है, इट माइट वॉबल ऑन अ फ्लैट सरफेस, बट अलॉन्ग विद द कैमरा सेटअप देयर इज अ डुअल LED फ्लैश राइट beside it. So this is the back design. I like the light streaks that it shows off in different lighting and the gradient finish to it. और इसकी प्राइस की बात करें तो 50,000 पाकिस्तानी रुपीस के अंदर ये मार्केट में अवेलेबल है। और अगर हम इसको ओप्पो के लास्ट F सीरीज़ के फ़ोन से कंपेयर करें, दैट इज़ द F17 Pro, तो स्लाइट अपग्रेड है उससे। इसमें इन माई पर्सनल ओपिनियन प्रोसेसर माइट हैव बीन बेटर, और इसके अंदर आपको रैम थोड़ा सा अपग्रेडेड मिल रहा है, 8 GB ऑफ रैम मिल रहा है विद अपग्रेडेड स्टोरेज ऑफ 128 GB. सो या दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट फॉर द रिव्यू। उम्मीद है आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लेट अस नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस फोन इन द कमेंट्स बिलो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन फेसबुक, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।